Good afternoon, dear student and concerned teacher. I am Bijay Sankar Sahu from Government High School Sargipali, Sundargarh. Welcome to this live session virtual class from our virtual studio Sundargarh. Today I am with a very interesting concept of English grammar. Before going to start the topic, little bit I want to know whether you know about grammar. What is grammar? Grammar is a branch of study. This is particularly related to language. Grammar helps us to know how to write, how to speak and understand a particular language. Grammar of every language has a very crucial role to play, whether we need to understand a particular language and we are going to write a particular language and we are going to speak. So while we are going to do all these things, we must know the grammar of that particular language very much. So dear student, today I am with a lessons from English grammar, that is determiners. So let's start. So we will start. Before going to start the concept right now, you are having a picture here. You need to identify whatever you can observe in this picture. You need to tell here. So you can find a very beautiful picture here. So look at this picture and tell what you can see. We will start from here, one by one, particularly student. Anyone? You can answer. Student from TPS High School, you can answer. What you can find in this picture? Lefrifoda Girls High School. Any student from Lefrifoda Girls High School? Very easy. Whatever you can observe, you just say to me. You just see what you can find over there. What you can find in this picture. We see. We see. Can say. Okay. Yes. Town is telemarket. Town is telemarket. Student, okay, we will see one by one here. You just see, this is an angel, but a pori. Next, some clouds you can find over here in this picture, some clouds. So an angel came from the heaven and here you can find some clouds. And next to it, here the moon. You can find in this window, you can find the moon. Next to it, this is a window. Very easy. I told you to identify. Next to it, a lady. A lady in front of an angel. Another three particular verses you can find over there. So dear student, whatever the picture it is tell, all these particular things we will study over here. Here, an angel, some clouds, the moon, a window, a lady, three vases. So I have particularly marked here the noun part in red color, and before the noun part, what are the noun parts over here? Who are the nouns over here? Angel, window, moon, lady, vases, clouds. All these are the words refers to noun. But before the noun, you can find some words attached or placed over here. And the A, here also A, there are three, and here some. Dear student, all these are specifying whatever the nouns in this picture we have. So here we are going to learn about all these words, whatever it is used before noun. They are called as determiners, dear student. So we are going to discuss about determiners today.
So first of all, we will try to define here who are determiners. So determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. In the previous picture, we have found that an angel. Here, this is the picture of an angel, and here it is use n. N or अर्थ कौन गोटे गोटे परी एटी दीटा परी नाही गोटे परी अछि. So here the word n is specifying angel. How many angels are there? केतटा एठी angel अछंती ना गोटे angel अछि एठी. So here the word n is specifying this noun angel. So in this way determiners specially specify or it refers what the noun particularly refers to. So in this way we have particularly so many determiners and we need to learn their uses. So let's learn where we need to use determiners with carefully. So determiners are used to refers to the noun, and here referring means what? Referring means showing us who or what the noun is pointing to or talking about. Also, they quantify the nouns. It not only refers the noun or pointing or talking about the noun, it also quantifying the noun. So what do you mean by quantifying? Quantifying means showing how much, kete, or something there is, or how many, kete jana, kete. এই অর্থরে মধ্য আমি ডিটারমিনার্স কো ইউজ করিথাও before the nouns. So always we use determiners before a particular noun. So next to it we will classify the various types of determiners. We have so many types of determiners, but we have taken over here few the most important one, and one by one we are going to discuss. So determiners and its type, dear student, the first one is the articles, which today we are going to discuss. Next to it, demonstrative. Next to it, we have numerals. Next to it, we have quantifiers. Okay, next to it, we have possessives. And next to it, we have distributives. So here, how many determiners we have taken today? We have taken 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 determiners we have taken today. Okay, more also we will add in the later part because so many determiners are there, but the most important we have taken over here. Okay, another one also type we will discuss in this chapter, that is W as determiners. I have not mentioned here, but W as determiners also it is there. Other types of determiners also it is there, but here there is just a simple classification, and the most important 6 I have shown over here. Next, first of all, we will discuss about the articles. Every day, dear student, whenever we are writing sentences in English, we use the articles. So what are those articles? Articles are a class of determiners. Why they are called as determiners? Because they determine the meaning of noun. Anything or any word that determine the noun, that refers to the noun, what it talk about, what it refers to, or how much, how many, it's quantifying. So they are called as determiners, already we have discussed. So articles are certain class of determiners as they are determine the meaning of nouns before which they are used. So articles, here we have 2 types of article. The first type of article is definite article, and the second one is indefinite article. So we will discuss, dear student, what is definite article, another one is indefinite article. Normally when we are speaking in English grammar, we have 3 articles. They are the, a, or n. So we have classified again them into 2 category, that is definite article, indefinite article. So we will put the under definite article and a or n under indefinite article. Okay, so dear student, we have particularly put the under definite article and we have put a or n here under indefinite article. Why the we have placed here under definite article? Why we have placed a or n
and the indefinite articles we are going to discuss. Before particularly going to discuss all this thing, little bit I want to tell you, in English grammar, we have normally sounds. Every language had its own sound. So English grammar also it has its own sound. So while we are going to discuss about indefinite articles, we must know how many sounds are there in English grammar. In English grammar, we have 44 sounds. So among those 44 sounds, where we need to use A or N, I am going to tell you little bit wait. First, we will discuss about definite article, that is the. Okay? So where we use definite article the and why it is called as the, we are going to discuss. Dear student, the is called as the definite article because it specifies and identifies a person, place or things. ଯେତେବେଳେ ଦ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ କୌଣସି ନାଉନ୍ ଆଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସେ पर्टिकुलर नाउन को से स्पेसिफाई କରିଥାଏ ସେଟା ଗୋଟେ पर्सन ହେଇଥାଇ ପାରେ प्लेस ହେଇଥାଇ ପାରେ थिंग्स ହେଇଥାଇ ପାରେ it is not usually used before on count and count nouns in general sense साधारण भाव रे हमें द को यूज करूनी को केस रे ना जनरल सेंस रे अनकाउंटेबल नाउन हेथाउ कि काउंटेबल नाउन हेथाउ नॉर्मली हमें यूज करूनी बट इन स्पेसिफिक रेफरेंस एटा अनकाउंटेबल नाउन हो बा काउंटेबल नाउन हो we use the before them example ले जबा specific reference कौन एवं general particular reference कौन इट would example हमें नहीं जबा water is essential for life इटी water रखे ची specification नहीं here water refers to the water from particularly any source here water from any source water from pond water from river water from rain whatever water is essential for life here it is not talking about water is from particularly we got from where or which particular water here it is refers to that's why in general sense we have not put the before this particular is जो noun water particularly या अगर हमें आउ द लगोन but whenever we are specifying the water that water it is there in a particular place where that water is there the water in this pot is muddy पाखरे गुटे pot अछि एवं तमे इंडिकेट करूछ स्पेसिफाई करूछ जे एही पात्रर पानी मैला अछि मडी अछि कादुओ अछि तो यू आर स्पेसिफाइंग जे पात्रर थिबा पानीटा कोन अछि गोलिया अछि यू आर स्पेसिफाइंग एही पात्रर पानी गोलिया अछि there we need to use the over here that's why एठी वाटर आगरु कोन लाग गला द लागे गला in this way in specific reference we are using the before noun that's why the is called as definite articles because it's define it's specify it's particularly identify na कोठिकार पानी ना से पॉट रे थिबा पानी हमें आइडेंटिफाई कले हमें स्पेसिफाई कले जे पॉट रे थिबा पानी टी गोलिया that's why we use water before particularly that water we have used the over here एवं एठी water ता हला uncountable noun हमें ऑलरेडी पढी सारी जे द हमें uncountable केस रे मध्ये यूज करिबा काउंटेबल केस रे मध्ये यूज करिबा किंतु स्पेशल रेफरेंस थिबा कथा स्पेशल केस थिबा कथा नेक्स्ट आउट एग्जांपल नै जिबा बुक्स आर गुड फ्रेंड्स हमें जानो बुक्स आर गुड फ्रेंड जे कोनोसी बुक्स ही पारे सेटा स्टोरी बुक ही पारे तमर पढिबा बुक्स ही पारे नोवेल ही पारे किछि भी पर्टिकुलरली मैगजीन बुक्स मध्ये ही पारे सो हियर हमें किछि स्पेसिफाई मेंशन करिनु जे स्टोरी बुक्स आर गुड फॉर फ्रेंड्स सॉरी आवर गुड फ्रेंड्स ना एठी पर्टिकुलरली हमें लिखिनु जे साइंस बुक्स आर गुड फ्रेंड्स ना मैथ्स बुक्स आर गुड फ्रेंड हमें स्पेसिफाई करिनु को बुक्स ओवरऑली हमें बुक्स कथा कहूचे द मेंशन करबा जरूरी नुहे बट जत्ते बेले हमें कहूचे गोटे पर्टिकुलर बुक कथा एठी देखो कोन लिखा गला द बुक्स आई बट यस्टरडे आर हेल्पफुल जो बुक गुडा को मु गतकाली किणी की आनी थिली से गुडा को बहुत हेल्पफुल एठी हमें स्पेसिफाई कर देले जे गतकाली किणा हेथिबा बुक गुडा को that's why we use here the books I bought yesterday are helpful here that's why we have used the so in special reference we use the over here dear student this month only we will discuss about particularly definite article in our next particular class whenever we have our next class we will discuss more about
definite article the, because a clear and a vast particular study more again it is there. Next, let's concentrate on indefinite articles. Already I told you there are two indefinite articles are there. One is a, you can pronounce it as o also, and another one is m. Both refers to one. ए दीटा पर्टिकुलर आर्टिकल जार मीनिंग है गोटे काउंटेबल नाउन केस रे व्यवहार होता है एवं ये कहा को स्पेसिफाई करे कहा को रिफर्स करे देखिबा ए और एन इज कॉल्ड indefinite article because they do not refers to any specific person, place or things. एठी जो ए एवं एन यूज करा जाय थाए ये स्पेसिफाई तो करी थाए नाउन को किंतु पर्टिकुलरली से नाउन विषय रे पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करेनी आइडेंटिफाई करेनी जे सही पर्टिकुलर जिंस ही बोली हला तो हम एग्जांपल ले जबा तापर बुझिबा here both the particular articles a and n use only before singular countables noun गोटे जोठी थिबो हमें इंडिकेट करिया पई a यूज करिथाउ किंबा n यूज करिथाउ देखिबा a is used before nouns beginning with a consonant sound. Dear student, I was talking about sound in English grammar. I already told you there are 44 sound in English grammar. There is a particular branch that is called as phonetics in English that refers to sound, the branch of study of English grammar that refers to sound. So there are 44 sound in English grammar, and out of those 44 sound we have 20 vowel sound. Earlier you have learned there are 26 alphabets are there in English grammar. Yes, it is correct. And out of that we have you know A, E, I, O, U. These are called as what? These are called as vowel. These are called as vowel, and we have how many vowel? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 vowels. But in English grammar, dear student, there are 20 vowel sound. So these things you need to know that we have 20 vowel sound, and those vowel sound we must particularly use while we are using before particularly a noun, and we must particularly careful about the use of n over there. So where it is used, let's particularly concentrate over here. A is used before the noun beginning with the consonant sound. देखो आगुरु तमे स्मॉल क्लास गुडा करे पढिथिलो जे a कोठी यूज होई थाए a रो अर्थ हला गोटिए कोठी यूज होई जो पर्टिकुलर वर्ड गुडा का कॉन्सोनेंट रु स्टार्ट होई थाए माने सपोज गोटे हमें नै गले गोटे पर्टिकुलर गोटे वर्ड नै गले बी ओ ओ के बुक आमे देखु जे ए जो लेटर टा फर्स्ट लेटर टा बी रु आरंभ माने ये गोटे कॉन्सोनेंट रु आरंभ ता आगुरु आमे लिखि दउथिले ए बोली किना किंतु ए जिंसटा तमको टिके रिमूव करिवार अछि हियर obviously a book will be there, but here why it will be a book? Because book is start from the consonant sound, that is book, ba, and ba is a consonant sound. The student, ba is a consonant sound. That's why we use here a. Okay, like this, another word we can also take. Suppose I am writing here M-A-N-G-O. So what is its pronunciation? Its pronunciation is mango. So suppose there is only one mango and we need to use a or n before it. So what we need to use? Obviously it will be a. Why it is a? Why we have used here a? Because mango, it start from the consonant sound ma. It start from the consonant sound ma. This student are very easy things I am going to tell you. As you all know Odia language and Oriya alphabets. We know about Swara Varna and Vyanjana Varna. Swara Varna from O to O and Vyanjana Varna from Ka to Kya. All those sound you will remember here while we are solving the problem of A or N. In the next class, while I am going to discuss clearly about indefinite articles, I will teach you those tricks where we need to use all these things. Next, concentrate. N is used before nouns
beginning with a vowel sound. I already told you there are 20 vowel sound in English language or in English grammar. So it is very easy. Just remember the alphabet of Odia language. We are having Swara Varna, as you know, A, E, U, A, Oi, like this. All these sounds are vowel sound. So those sound you will remember while we are solving the problem of indefinite article, and it will be very easy for all of you. So let's check. Here an example I have taken. There is a book on the table. Here already I have told you book, it's produced the sound B, that's why I have used here A. Next, another example, give the child an orange. Dear student, here the word orange particularly produce the sound what? Produce the sound what? The word orange produce the sound O, and you know O is a vowel sound. I already told you O to O पर्यंत मने पकेइबो हमर स्वर वर्ण ओडिया रो O A E E U ए जो स्वर वर्ण अछि से साउंड गुडा मने पकेइबो एठी कोड आसिला ऑरेंज O आसिला सो O is a vowel sound आसिला पकेइबो N. Very easy, very easy. So here N refers to any, N orange refers to any orange, any one orange. ये कहूनी जे को particular orange जोटा टेबल ऊपर रखाइतबा orange ना बैग भीतर रखाइतबा orange specify करूनी किंतु ये कहूची गोटे orange. That's why it is called as indefinite articles. तो ये विषय पुणी next class में पढ़िबा definite articles, indefinite articles रो पूरा next class रे clearly पढ़िबा. Just you know this much only. एबे गोटे activity करिबा. Ready हे जाओ. आमे A लगाइबा, N लगाइबा. Students from different school you can participate right now. तो आमे को कोठी लगाइबा देखो. एठी अछि एक university, man, engineer, sir. कुह मते एक आगरे N लागिबो ना A लागिबो? एक A university. अच्छा A university. Okay, A university. Very good. A university. कहीं के नहीं pronounce हला U. Your sound produce कला. एवं यो गोटे consonant. Very good. अच्छा एक कौन हबो? N एक हबो ना A एक हबो? N. Again. Very good. Very good. Because it pronounce. Very good. It pronounce A. Ek. A. Man. Man A. Very good. Very good. Next, engineer. Engineer N. Very good. Because it pronounced engineer E. N. Yes, engineer E and engineer. Very good. Next thought. Start date. Good. A. All your answer is correct right now. Let's verify. Okay. Very good. We will proceed to the next. Next, we have demonstrative determiners. So under demonstrative determiners, we have these, that, those, these. These are the class of determiners called as demonstrative because they particularly demonstrate nouns. Here the example we will take. This pen writes well. इठी particular गोटे pen को कहा जाउची singular countable noun case रे यूज करा गला. This pen गोटे pen पाखरे अछि ताको इंडिकेट करी कहा गला जे this pen writes well. ए पेन टा भलो लिखि होची पर लिखुची बढ़िया भलो लिखि होची. तपरे this that water is not good to drink. गोटे पर्टिकुलर पॉट रे पानी अछि एवं सेठी तुमे स्पेसिफाई करी कहूचो जे this that water is not good to drink. मान this water कहूचो किमा that water कहूचो this एवं that देखो एठी अनकाउंटेबल नाउन केस रे यूज होची काहे ना वाटर टा हला अनकाउंटेबल नाउन. आउट एग्जांपल नै जिबा these or those people are hard working. देखो प्लुरल सेंस रे people कोन प्लुरल सेंस रे आमे कोन यूज करूचे these एवं those डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज करूचे. तो ए जो इटालिसाइज वर्ड दिस हला दैट हला दिस हला दोस हला एक गुडा को सब कोन डेमोन्स्ट्रेटिव काहे कि ना डेमोन्स्ट्रेट करूची एवं हमर नाउन विषय अधिक किछि सम्यक सूचना प्रदान करूची सेथि पय याको हम कहूचे डेमोन्स्ट्रेटिव. यार यूज कोकुटी हम करथौ ऑलरेडी हम देखि सरले जे दिस एवं दैट टा यूज करूची हम काउंटेबल केस रे मध्ये अनकाउंटेबल केस रे मध्ये किंतु these एवं those को यूज करूचे को केस रे केवल प्लुरल काउंटेबल नाउन केस रे हमें व्यवहार करूचे जोटा प्लुरल हेतिबो किंतु गणी होतबो काउंटेबल नाउन हेतिबो. ओके तो हमें जीवा नेक्स्ट एठी हमर नेक्स्ट पर्टिकुलरली डिटरमिनर्स
सेटा हला numerals. So numerals already you know every day you are using numbers and all those numbers are coming under numerals. ताको हमें numerals कहते हैं in English grammar. तो numerals are dear student दी प्रकार. गोटे हला cardinals, another one is ordinals. Cardinal जोटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 like 10, 1000, 2000 ये सब गुड़ा कौन cardinal और ordinal कौन ना first, second, third, fourth, fifth, sixth like this 20th, 30th, 31st all these are called as ordinals. तो ये जो cardinal एवं ordinals ये सब मध्य हमें noun आगे व्यवहार करते हो as a determiner है ना आकु हमें सेपरेटली मध्य व्यवहार करि परिबा एवं कॉम्बिनेशन मध्य हमें व्यवहार करि परिबा सेपरेटली केंति व्यवहार करि परिबा गोटे एग्जांपल नै जेबा देयर आर 3 चिल्ड्रन और देयर आर पर्टिकुलरली 25 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास आम क्लास रे 25 स्टूडेंट अछंती तो 25 को हमें स्टूडेंट आगे यूज कले स्टूडेंट हला नाउन नाउन आगे 25 यूज कले ओके तो एई भली आमे यूज करि परिबा कार्डिनल्स को सेई भली आमे ऑर्डिनल्स को मध्ये सेपरेटली यूज करि परिबा आमे एका संगे मध्ये यूज करि परिबा एवं आउटे रूल्स अछि नेक्स्ट क्लास रे पढिबा पोजीशन ऑफ कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स ये सब बेले कोन हेतै ऑर्डिनल्स प्रथमे लागि थाए कार्डिनल्स ता परे लागि थाए गोटे एग्जांपल नै जिबा तळे द फर्स्ट टू बॉयज वर हेल्दी द फर्स्ट टू बॉय देखो एटी फर्स्ट टा कोट लागिला ऑर्डिनल लागिला सेकेंड पुणी लगी टूटा सेटा कौन कार्डिनल्स तो सब बेले जिते बेले आमे कार्डिनल यूज करूचे ऑर्डिनल यूज करूचे गोटे सेंटेंस रे डिटरमिनर भाव रे नाउन आगरे सब बेले ऑर्डिनल प्रथमे लगी थाए तापरे कार्डिनल लगी थाए दिस इज अ पर्टिकुलर रूल यू नीड टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट तो एटा आमे देखिबा नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्टिकुलरली डिटरमिनर्स सेटा होची क्वांटिफायर्स कोन क्वांटिटी को सूचौथुबो जो पर्टिकुलर वर्ड नाउन रो क्वांटिटी को सूचौथुबो हमें देखि देबा कोन ना मेनी फ्यू अ फ्यू सेवरल ए सब गोटे गोटे क्वांटिफायर पुनी कोन ना मच लिटिल अ लिटिल ए सब गोटे गोटे क्वांटिफायर आउ पुनी कोन एनी नो सम एनफ मोर लेस बोथ ए सब गोटे गोटे क्वांटिफायर ए लॉट ऑफ मध्य a great deal of मध्य ये सब गोटे गोटे पर्टिकुलरली क्वांटिफायर्स किंतु को पर्टिकुलर नाउन रेटा यूज हुए सेटा हला इंपोर्टेंट सब नाउन केस रेटा यूज हुए नी आमे देखि लेबा मेनी फ्यू अ फ्यू सेवरल एटा यूज होई थे प्लुरल काउंटेबल नाउन केस रे एवं से प्लुरल भाव को कैरी करि थाए किंतु मच लिटिल अ लिटिल ए सब गुडा को अनकाउंटेबल नाउन केस रे यूज होई थाए जंती वाटर हला मच वाटर लिटिल वाटर ये सब अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन आगे में मच लगेबा लिटिल लगेबा ए लिटिल लगेबा बुझि परलो नेक्स्ट एनी नो सम एनफ मोर लेस बोथ ऑल ए लॉट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ ए सब डिटरमिनर्स को जोटा कि क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स को हमें अनकाउंटेबल केस रे मध्ये यूज करि परिबा काउंटेबल केस रे मध्ये यूज करि परिबा हला हमें यार यूज टिके देखिबा एठी गोटे टेबल अछि टिके देखिनियो मेनी रो यूज मच रो यूज मेनी को हमें यूज करूचे को केस रे ना प्लुरल काउंटेबल केस रे मेनी पीपल वेर प्रेजेंट देयर काउंटेबल केस रे प्लुरल काउंटेबल केस रे किंतु मच को हमें यूज करूचे अनकाउंटेबल केस रे जंती वाटर अनकाउंटेबल तो हमें सेठी यूज कले एवं जनरली एठी गोटे कथा अछि जे मच को हमें यूज करथो इंटरोगेटिव जोटा कि क्वेश्चन सेंटेंस गुडा करे एवं नेगेटिव सेंटेंस गुडा करे जोठी नॉट रो यूज होची एटा टिके देखिबो तापरे डियर स्टूडेंट आमे जीवा देखिबा फ्यू एवं ए लिटिल रो यूज प्रथमे आमे देखि देबा फ्यू अ फ्यू रो यूज टा कोडी हेइ थाए ना एटा यूज हेइ थाए प्लुरल काउंटेबल नाउन केस रे अ फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग एठी अ फ्यू कहिले लेस इन नंबर को मैं बुझौची एवं फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन किछि स्टूडेंट जोटे कम स्टूडेंट अल्प स्टूडेंट से माने कोन कले ना एग्जामिनेशन पास करि गले एठी फ्यू रिफर्स टू अ वेरी स्मॉल नंबर जोटे कि अल्प both the word of few and few are coming under quantifiers determiners and they use with plural countable जो countable को हमें गणी पारो plural countable हैला किंतु all little किंबा little हैला सेटा हमें यूज करथौ को केस रे ना uncountable केस रे जंती there is a little water in the jug little water means कोन ना not so less बेसी कम न किंतु कम पॉजिटिव सेंस रे यूज हेथै he has little time to spare ता पाखरे बहुत कम टाइम अछि स्पेयर करिया पई बितेबा पई अर्थ कोन गोटे नेगेटिव सेंस पळे आसला तो लिटिल टा यूज हेइ थाए नॉट सो मच केस रे
जोटा कि अनकाउंटेबल नाउन सहित जड़ित होता है। एठी डियर स्टूडेंट देख एठी टाइम टा हला नाउन, एठी वाटर टा हला नाउन, सब बेले डिटरमिनर्स गुडा नाउन आगे लगुची हला। ए सब टिके मार्क करिवो। नेक्स्ट हमें देखिबा सम एवं मोर रो यूज। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, सम टा गोटे कौन आम कही सोम है, ए लट ऑफ है, ये सब गुड़ाक मोर है, एनी है, सब गुड़ाक प्लूरल यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल्स अनकाउंटेबल्स यूज होता है। तो आम देखा सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, आम गणी पार बर्ड्स गुड़ाक, तो सम बर्ड्स आम लिखिपर। किंतु सोमटा यूज होता है अनकाउंटेबल केस रे। देयर इज सम वाटर इन द पॉट, अनकाउंटेबल केस रे यूज कर। मोर यूज से भाई देखा मोर बर्ड्स हैव जॉइन देम, पुणी ताकू आमे अनकाउंटेबल केस रे यूज कर परिबा। आई नीड मोर वाटर, मते अधिक पानी दरकार हैला। तापरे नेक्स्ट ए लॉट ऑफ को आमे प्लूरल काउंटेबल केस रे यूज कर परिबा एवं अनकाउंटेबल सहित यूज कर परिबा। ए लॉट ऑफ कहले कोन आमे प्रचुर बुझिथो, बहुत गुडे को बुझिथो। तो देखिबा ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, बहुत गुडे लोक आसुचंती। आई नीड अ लॉट ऑफ फूड फॉर देम, से मानको पई मते बहुत गुडे फूड दरकार। तो एठी अनकाउंटेबल फूड टा अनकाउंटेबल, तो सेट सकाशे आमे ए लॉट ऑफ यूज करूजे बोथ केस रे। तापर नेक्स्ट देखिबा एनी, देयर आर नॉट एनी पर्सन्स हियर। एठी देखो डियर स्टूडेंट गोटे सिंपल कथा, एनी टा यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस गुडा करे एवं नेगेटिव सेंटेंस गुडा करे, जोटा कि पर्टिकुलरली तुमको सेंटेंस देथिबो इंटरोगेटिव टाइप रो एवं नेगेटिव सेंटेंस टाइप रो देथिबो, सेठी तुम एनी लगेइबो। तो देयर आर नॉट एनी पर्सन्स हियर एंड इज देयर एनी वाटर इन द पॉट। देखो एनी टाको आमे अनकाउंटेबल केस रे मध्ये यूज करूचे, जोटा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस गुटे आमे सेठी नै जे इज देयर एनी वाटर इन द पॉट, वाटर टा हला अनकाउंटेबल, ता आगरे पर्टिकुलरली यूज हला एनी हला। इज देयर एनी वाटर इन द पॉट, सही पर्टिकुलर पॉट रे पानी किछि अछि कि, तो किछि केस रे आमे पर्टिकुलरली यूज करूचे एनी। तापर नेक्स्ट जिबा, ये सरी गला तमरो क्वांटिफायर्स। तापर आमे जिबा पोजेसिव। द स्टूडेंट पोजेसिव्स आर आल्सो हैविंग टू टाइप्स ऑफ पोजेसिव, वन इज नॉमिनल पोजेसिव आ गुटे हला प्रोनोमिनल पोजेसिव। ये नॉमिनल पोजेसिव कोन ना, एठी नॉमिनल पोजेसिव कहिले देखो गुटे एग्जांपल आमे नै छै बहुत गुडे, राजास मोबाइल, राजार मोबाइल, मीरास फादर, गर्ल्स हाई स्कूल। तो नॉर्मली एठी देखो जोटा नॉमिनल पोजेसिव सेटा ऐड हेई थाए, कोन केंती ऐड हेई थाए, नाउन परे परे ऐड हेई थाए एफस्टॉप एस द्वारा किबा एस एफस्टॉप दिया जाय थाए एवं सेगुडा को यूज करा जाय थाए। तो राजार मोबाइल ना, मीरार फादर, गर्ल्स हाई स्कूल, झियो मानकर हाई स्कूल। तो ए सबु केस रे देखो नाउन आगुरु गोटे गोटे लागि छि वर्ड एवं ता आगुरु पर्टिकुलरली कोन लागि छि, नाउन आगुरु एतले से वर्ड ता लागि छि एफस्टॉप एस हम यूज करूचे। तो यही पर्टिकुलरली जो वर्ड गुड़ाक ना गुड़ाक आम जो लिखुचे ताको आम कहूचे नॉमिनल पोजेसिव, बिकॉज नॉमिनल रिफर्स टू नेम, नॉमिनल रिफर्स टू नेम। ओके डियर स्टूडेंट, तापर नेक्स्ट देखिबा आ गुटे टाइप ऑफ पोजेसिव डिटरमिनर्स जोटा हला प्रोनोमिनल पोजेसिव। से प्रोनोमिनल पोजेसिव कोन, जेमिति प्रोनाउन सेही भलिया पोजेसिव ता गुटे जते बेले प्रोनाउंस भलिया यूज हला ताको आम कहि दबा प्रोनोमिनल पोजेसिव। केमति ना, माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ए सब गुड़ाक प्रोनोमिनल पोजेसिव। केमति तुमे कहूछ वेयर आर माय बुक्स, मो बुक्स कोठी, तो दिस इज प्रोनोमिनल पोजेसिव हला। अच्छा गोटे सेंटेंस रे हमें देखिबा बोथ प्रोनोमिनल एंड नॉमिनल। तो एठी देखो गोटे सेंटेंस हमें नै छै, रश्मिस ब्रदर इज माय फ्रेंड। तो एठी रश्मिस एटा कोन नॉमिनल पोजेसिव, आ माईटा कोन, माईटा हला प्रोनोमिनल पोजेसिव। किंतु एठी गोटे वेरी केयरफुली यू नीड टू बी जे पोजेसिव डू नॉट गो विथ आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स की डेमोन्स्ट्रेटिव की आर्टिकल सहित ये लागि न थाए, ये सब बेले पर्टिकुलरली नाउन रो आगरे ही लागि थाए एवं हमकु नाउन को स्पेसिफाई करि थाए, आइडेंटिफाई करि थाए हला। सेथि पई हमकु पोजेसिव गुडा को मध्य हमें कोन बोली कहिथाउ ना, डिटरमिनर्स बोली कहिथाउ। तापर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स रे कोन कोन अछि ना, ईच अछि, एवरी अछि, ईदर अछि, नीदर अछि, okay, etc. are called a class of determiners which is called as distributive. ए सब गुडा को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव बोली कहूचे। इथे हमें यूज देखिबा, each child got a prize. Yes student, here each refers to distributive determiners और child refers to noun हला। तो चाइल्ड रो अगर इच लागिला तो एटी इच कहिले काहा को बुझा जाउची ना, इच चाइल्ड इज सीन एज सेपरेट इंडिविजुअल। प्रत्येक छात्र, प्रत्येक छुआ एटी कोन हेले गोटे गोटे प्राइज से माने पाइले। तो इच रिफर्स टू एवरी इंडिविजुअल, माने जण जण को हम बुझौचे
every तापर हमें देखिबा every जो particular distributors every child got a prize जेते बेले हमें every कथा कहूचे सेटा ग्रुप को बुझाउची all are seen as a part of a whole body गोटे particular part of a whole body को बुझाउची ग्रुप को बुझाउची जे सेही ग्रुप रो प्रत्येक को प्राइज मिलला हैला तापर नेक्स्ट देखिबा नीदर बॉय इज क्लेवर माने एठी नीदर टा नेगेटिव हिसाब रे यूज हेइ थाए एवं ईदर टा पर्टिकुलरली पॉजिटिव हिसाब रे यूज हेइ थाए केंति यूज हेइ देखिबा नीदर बॉय इज क्लेवर एठी नीदर रो मीनिंग कोन ना नॉट वन केही भी बॉय क्लेवर नुहंती नीदर बॉय इज क्लेवर तापर ईदर कोन ईदर रूम विल बी सुइटेबल फॉर अस ईदर कहा को हम बुझिथौ ना एनी वन ऑफ टू दीटा मधुर गोटे बेले बेले ईदर द मीनिंग आमे बोथ को मध्य सूचेबा का यूज करथौ तो एठी किंतु जो आमे यूज करले ईदर रूम विल बी सुइटेबल फॉर अस माने हला से दुईटा मध्य जे कोनोसी गुटे रूम सुइटेबल आमो पई हला एटा तमरो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट जोटे कि आमे देखिथिले ईच एवरी नीदर ईदर यार तमे यूज टिके देखि था आमे एक्सरसाइज कला बेले तमे आंसर दबा द लास्ट वन दैट इज डब्ल्यूएच डिटरमिनर्स मु तुमको कहितली गोटे आवरी गोटे इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ डिटरमिनर्स अछि सेटा हला डब्ल्यूएच डिटरमिनर्स तक हमें देखि देबा जे डब्ल्यूएच वर्ड्स गुडा तमे जानि छ हु वर्ड गुडा को डब्ल्यूएच वर्ड्स गुडा को व्हाट व्हिच हुज कोन व्हिच केउटा बा कुछ काहार ए सब गुडा को कोन ए सब गुडा को मध्य गोटे गोटे डिटरमिनर्स नाउन आगरो यूज हेइ थाए हैला तो हमें देखिबा व्हिच पेन डू यू वांट व्हिच पेन को पेन तमे चाहुचो बा मागुचो बा इच्छा प्रकाश करूचो तो हियर व्हिच रिफर्स टू डब्ल्यूएच डिटरमिनर्स विज पर्टिकुलरली आस्किंग अबाउट अ पेन तो को पेन पर्टिकुलरली तमे चाहुचो बोली सेठी गोटे क्वेश्चंस कला तो से को पेन तुमको कुहा बोली से कहूची तो हियर व्हिच पर्टिकुलर इज अ डिटरमिनर से स्पेसिफाई करिवो नेक्स्ट तापरेटी हुज चिल्ड्रन are they semane kahar chua what time is he coming here that is what dekho wh words time ta hela noun agur lagi chi what tapare puni eti what color ta hela noun dear student ta agur lagi chi what puni I do not know which persons to meet mate jana nahi je mu ko person ko meet karibi so eti dear student person ta hela noun and here which it is used here and this is ws determiners in this way dear student today we have completed 7 category of determiners okay and right now it is the time to discuss what you have learned so get ready I'm having my questions over here get ready with your microphone I'm going to ask you and you are going to answer me very interesting chapter This water is clean. Okay, this water is clean. That is absolutely correct. Your answer is correct. This water is clean. Correct. Next question. Next girl over there is my sister. BS High School. BS High School. Any student from BS High School? That girl over there is my sister. Okay, so here you are talking about this girl's over there is my sister. Or that girl over there is my sister. Dear student, you need to look over here. What it is mentioned over here. As accordingly, the determiner here it will be attached. This girl. Sethare. माने दूर रे अछि. This लागिवो ना that लागिवो. This. This माने हला एहा. That माने हला ताहा. That. Very good. So here it will be that. Okay. जीवा देखिवा. So that girl over there is my sister. एठी जदी here थांता, एठी जदी here थांता, एठी this लागि थांता. बुझि परछो? एठी जदी here थांता, एठी this लागि थांता. Okay, next जीवा the very good because it is the जोटा हाँ very good. The determiner टा हमर लागिला एवं ये सब बेले ordinal आगरे लागि थाए. हला very good. One. Okay, next. Trees were cut off. Many or much. Trees are countable or uncountable, dear student? What trees are countable or uncountable? Many trees. Yes. Jehetu tree ta Many countable. trees. Yes. Correct. Your answer is correct. Jehetu tree ta hela countable, sethi pa ethi lagi jiba many. Many ta use heithai countable case re.
Okay, so seithi pa ethi much lagilani, ethi lagila many. Okay, very good, all of you have answered correctly. Next jiba au kichi question puni. There is not a dex oil in the lamp, many or much. Ethi oil ta countable ki uncountable seita janibar achi. There is not many oil. Na dear student, ethi oil ta hochi uncountable. There is not much oil, much. That's Yes. very much oil. Yes, much oil it will be here because oil is uncountable ebang much lagi thai uncountable noun case re hala. Next jiba, I have dex problem now, a few problem or a little problem. Ethi madhye uncountable countable bhagibar I have few problems now. I have a little problems now. देखो a little हमें यूज करूथिले uncountable केस रे a little water हमें uncountable केस रे little यूज करूचे तो a few एठी हे जिवो काहे ना प्रॉब्लम को गणी हबो हैला तो जे प्रथमे कहिलो आंसर a few his answer will be correct here, his or her answer will be correct here. Okay, thank you. Next जिवो पुनी next question, can you draw dex picture? मु तुमको कहिथिली जे जते बेले हमर पर्टिकुलरली हमें यूज करूचे किछि पर्टिकुलर Many pictures. कैन यू ड्रॉ Many देखो pictures. इंटरोगेटिव सेंटेंस एवं नेगेटिव सेंटेंस रे कहथिली गोटे डिटरमिनर्स यूज होइथा नॉर्मली pictures. वेरी गुड सेटा हे जिवो एनी. यस, द आंसर विल बी एनी. कैन यू ड्रॉ एनी पिक्चर? यस, वेरी गुड. नेक्स्ट, he has dex property, much property or a lot of property. Property गणी हबो कि गणी हबनी सही हिसाब रे लगेबो. A lot of किन काहे कि ना much टा particularly uncountable केस रे केवल यूज हेइ थाए किंतु a lot of both uncountable noun countable noun केस रे मतो यूज हेइ थाए सेहि पे हमें लगेबा a lot of property. Okay, clear. Next jiba, give a biscuit. Good. Give a biscuit to Dex child. Student from any other school, you can also answer. Every child. Okay. Give a biscuit to every child. Yeah. Okay. Here it is talking about a biscuit. गोटे गोटे बिस्कुट प्रत्येक को सेहि पय एठी लागला कोन each particular लागि जिवो काहे कि ना प्रत्येक को एठी दिया गला डियर स्टूडेंट प्रत्येक को दिया जिवो प्रत्येक को एवरी कहिले होल ग्रुप को बुझा जाए. इच कहिले जण जण को गोटे गोटे बुझि परलो जण जण को गोटे गोटे तो एठी पय लागिला गिव अ बिस्किट टू ईच चाइल्ड प्रत्येक चाइल्ड को गोटे गोटे ईच चाइल्ड. नेक्स्ट जीवा, डेक्स वन इन द मीटिंग Everyone. वेरी गुड काहे कि ना मास ग्रुप एचे होल को बुझाउची. वेरी गुड. हु हैज आंसर हियर? Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. very Sir, Sorgi Girls School. ओके, वेरी गुड. एवरी लागिबो एठी. वेरी गुड. नेक्स्ट जीवा आउ पांचटा क्वेश्चन अछि. सी हैज नॉट सॉल्व्ड डेक्स सम से किछि सॉल्व करी नेगेटिव सेंस रे यूज होउची कोन हबो? मेनी हबो ना एनी हबो? Any. Very good. Your answer is correct. Any sum. Okay. Next jiva, Thank you, sir. book is Thank you, mine. sir. Okay. This book is mine, but Dex is yours. That or any kono use hobo? That. Very That. good. That. That. Correct. Correct. That. Next jiva, that boys have done their homework. That boys or those boys. These. Yes, student. Here these it will be These. used here. Yes, who has answer? Your answer is correct because here boys it is mentioned. Boys plural. So boys plural here these will be used. That. Very good. Very good. Very good. Correct. Next. Does your cow give Dex milk? Milk is uncountable. Use accordingly. Much milk. Much milk. Very good. Very good. Very good. Excellent. Much milk. The district magistrate visited Dex flood affected area. Every or either. Every or either. Either माने हला दीटा मधुर गोटिए किंतु every माने कौन as a whole body से visit कले तो एठी कौन से visit कले as a whole affected area visit कले ना दीटा रु गोटे visit कले.
Every. The every. answer will be every. Yes, answer will be correct. Every. The district magistrate Thank you, visited sir. every flood affected area. Every eti hoba huge. Okay, dear student, you have answered very nicely, and I hope you have understood the concept. And here we came to at the end of Thank you, our sir. particular class. And here's some homework for all of you. I hope you will note it down, and with your concerned English teacher, you will make it rectify. And we will meet again in the next class with the definite and indefinite article. There is a very interesting concept in this chapter we have, that is the definite and indefinite articles. I will tell you about the vowel sound and the consonant sound, and I will make you clarify where you will use a or n in a very easy or interesting way. In the next class we will discuss. So thank you very much. If you want to ask anything, you can also ask right now, or you can note down all these particular questions where this is for you as a homework. Okay, dear student, I hope this chapter, the determiners, this chapter is quite interesting for all of you, and a few more parts also it is left. In the next class we will discuss, and you practice it more and more, whatever the concept that I have told you regarding countables and uncountables. While we are using determiners, you must think the particular noun is countable and uncountable. That is more important. Okay, to use a particular determiners before the noun, you must check whether the noun is countable or uncountable. That is the most important things everywhere we have found. And the rules, whatever we have used, where we need to use much, many, all these things also you need to think carefully, practice it. You will particularly perfectly you can do. I hope this is a very helpful for all of you. So thank you very much, dear student. We will meet in the next class. Thank you, everyone. Thank you.